and YouTube live session on innovation, entrepreneurship, and startup for the students and faculty, covering different topics of common interest. The program aims at encouraging and motivating the students towards innovation, entrepreneurship, and startup. The 36th session in this series, titled Pillar to Build Innovative Solution, is being organized today. To discuss this topic, today we have with us Mr. Dibyendu Chattopadhyay. Mr. Dibyendu is a student of IGNOU, where he is pursuing Master of Business Administration. He is an innovator and AppNovate IGNOU 2020 awardee. He has been selected in the top 30 winners of the Phase 2 of the 5G Hackathon organized by the Department of Telecommunication, Government of India. He had submitted an idea in 5G Hackathon and in the first phase got selected in the top 100 shortlisted candidates under the category Healthcare. Dibyendu created a prototype on real-time diagnosis and consultation on disease using 5G. The 30 use cases will be integrated with a 5G test bed, and on further evaluation, the top 3 winners will be selected in the next phase. Support will be given to scale and implement the 5G applications to make them market ready. Aimed at shortlisting India-focused cutting-edge ideas that can be converted into workable 5G products and solutions, the hackathon is spread across 3 phases. Today, Dibyendu will be sharing his experiences as an innovator with us. I welcome you, Dibyendu. I would now request you. IIC and my esteemed audience. I feel highly elated to get an opportunity to discuss on an important topic, pillar to build innovative solution. तो आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करने के लिए पिलर इनोवेटिव सॉल्यूशन बिल्ड करने के लिए क्या पिलर्स चाहिए. तो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन. We can. Yes. So today's topic is pillar to build innovative solution. So let us start with a basic question. What really qualify as innovative solution? As per Wikipedia, practical implementation of idea that results in the introduction of new goods or services or leads to an improvement in the offering goods or services. So Wikipedia का definition में innovative solution हम उसको बोलते हैं जब कोई हम लोग आइडिया इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे हमारे कोई गुड्स और सर्विसेज इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, और नहीं तो जो गुड्स और सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं. सो there will be a wholly new product or service, or there will be improvement in the product or service. So to take an example, if you have seen previously, we have all seen in most of the offices, hard copy files were being used to maintain the records. But now we are able to use new products such as laptop to maintain the records in most of the offices, which brought a paradigm shift in how the office work is being conducted. So पहले हम लोग देखते थे ऑफिस में हार्ड कॉपी यूज होते थे कोई भी ऑफिस काम मेंटेन करने के लिए, बट अभी हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं ऑफिस काम के लिए. सो एक न्यू प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं. To take another example, smartphone, which has revolutionized the way we interact digitally with each other. So these are the examples of innovative products. So mobile एक ऐसा न्यू प्रोडक्ट है जिससे हम लोग कैसे दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, टोटली रेवोल्यूशनाइज किया है. Now we'll take an example of innovative service. Lot of innovative service is being introduced in recent decades, such as Netflix, which brought movie streaming to us at the comfort of our home. Now we have option to watch movie in comfort of our home or to visit movie hall and watch movie. So अभी बहुत सी इनोवेटिव सर्विस लास्ट डिकेड में इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे नेटफ्लिक्स, जो हम मूवी स्ट्रीमिंग हमारे घर में लाते हैं. हम एट द कंफर्ट ऑफ घर के होम हम लोग उसको मूवीज को देख सकते हैं और हमारे पास ऑप्शन रहता है हम घर में बैठ के मूवी देखें क्या मूवी हॉल में जाएं. तो एक इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव सर्विस का एग्जांपल है. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल वेयर we are building a like incrementing on the whatever existing product there in the market. For example, Gillette. So Gillette 1957 it bought a product adjustable razor जो help करता है for our smooth shaving. Then in 1977 it introduced another product, Ultra Contour. It is the first twin blade shaving cartridge with a pivoting head which allows the blades to better follow the contour of our face for a closer shave. That made the shaving more convenient. तो और एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर प्रोडक्ट ऑलरेडी था उसको इंप्रूव किए. जैसे एग्जांपल 1957 में जिलेट ने लाया था एडजस्टेबल रेजर जिसके हम लोग ब्लेड को
रीयूज कर सकते हैं और उसको अच्छे तरह से टाइट करके हम लोग सेविंग मोर कन्वीनियंटली कर सकते हैं। उसी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके 1977 में जिलेट ने लाया अल्ट्रा प्रोडक्ट, जिसमें 2 ब्लेड था, और इससे क्या हुआ, हमारा सेविंग और कन्वीनियंट हो गया। और अभी हम लोग 3 ब्लेड यूज करते हैं, जो फर्दर कन्वीनियंट कर दिया है। तो ये है इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो दिस आर वेरियस की कंपोनेंट दैट इज नीडेड फॉर एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नेटवर्क फॉर टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप, उसने कुछ की पैरामीटर्स को लिस्ट डाउन किया है जो जरूरी है एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के लिए। दोज आर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, communication and collaboration, comfort with risks, initiative and self-reliance, future orientation, opportunity recognition, creativity and innovation. So what is critical thinking? So critical thinking is the capacity to apply higher level, process oriented, consider an issue from a range of possible perspective and use the reasoning to make decision. सो ये क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी है जिससे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं बहुत तरह से पर्सपेक्टिव सोच के, एक प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग के साथ क्रिटिकली एग्जामिन करके कोई अगर डिसीजन ले सकते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं। कोई भी चैलेंज के साथ खुद को मोल्ड कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, और हमारे एक्शन उसी तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। नाउ अनदर पैरामीटर इज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। दिस इज एन एबिलिटी टू क्लियरली एक्सप्रेस आवर आइडियाज टू एन इंटेंडेड ऑडियंस, including persuading others and work towards a common goal. So communication ability is a very important quality for an entrepreneur. So it is a capacity to move forward with a decision despite inevitable uncertainty and challenge. तो एक एबिलिटी है जिसमें हम लोग जानते हैं जो डिसीजन हम लोग लेने जा रहे हैं उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, चैलेंज है, फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ वो डिसीजन लेना, दैट इज कंफर्ट विद रिस्क। फिर नेक्स्ट क्वालिटी है इनिशिएटिव एंड सेल्फ रिलायंस। इट इज अ पावर टू टेक ओनरशिप ऑफ ए प्रोजेक्ट विदाउट इनपुट और गाइडेंस एंड वर्क टुवर्ड्स ऑब्स्टेकल्स इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंटली किसी से डिपेंड किए बिना, किसी के इनपुट के वेट किए बिना अगर हम कॉन्फिडेंटली खुद डिसीजन ले सकें और इनिशिएटिव ले सकें, दैट इज नोन एज इनिशिएटिव एंड सेल्फ रिलायंस। Next quality is future orientation. It is an optimistic disposition with a focus on obtaining the skills and knowledge required to transition into career. तो इससे हम लोग फ्यूचर फोकस रह सकते हैं ताकि खुद को मोल्ड कर सकें फॉर आवर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग एंड एक्सप्लोरिंग प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट सॉल्यूशन। ये एक क्वालिटी है जिसमें हम लोग कोई भी प्रॉब्लम आता है हमारे लाइफ में तो हम लोग उसको अपॉर्चुनिटी सोच के उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। Now next is creativity and innovation. So this is the ability to think of ideas and create solution to problem without clearly defined structure. जहाँ clearly defined structure नहीं है उस सिचुएशन में भी हम लोग आइडिया सोच के उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं इनोवेशन। जो चीज ऑब्वियस है, जो चीज जो भी नॉलेज अवेलेबल है उससे हम लोग बना सके, दैट इज नॉट इनोवेशन। जैसे हम लोग को पता है हल्दी, हम लोग कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हल्दी लगा देते हैं, मम्मी लगा देते हैं, तो दैट इज नॉट इनोवेशन, दैट बिकॉज दिस नॉलेज इज इजीली अवेलेबल। सो जो हम लोग हटके सोच के कुछ इनोवेटिव सोचना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए एंटरप्रेन्योर। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, based on my experience, I think a entrepreneur is also need a growth mindset. So what is a growth mindset? That we can always learn and do better. We should not inhibit ourselves that other person is better for it and I cannot do it as I do not have the good appearance, height, family wealth, etc. तो ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी होता है, जहाँ हम लोग जी वो माइंडसेट रहेगा हमारे पास, जो कभी भी हम लोग कोई भी चीज लर्न करके हम लोग बेटर कर सकते हैं। ये कभी नहीं सोचना कि वो हमसे बेटर कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास फैमिली वेल्थ है, हाइट है, अपीयरेंस है। तो कोई भी इनिवेशन माइंड में नहीं रखना, हमेशा सोचना दैट with the learning and effort I'll be able to do it. So इसमें ग्रोथ माइंडसेट में इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फीडबैक फ्रॉम अदर्स, दूसरे से फीडबैक लेना जरूरी होता है, फिर एक स्ट्रेटेजी रहना, और खुद विथ गुड हार्ड वर्क विल बी एबल टू अचीव एनी ड्रीम्स। सो दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट। So we discussed one important pillar, that is entrepreneurial and growth mindset. Now another important pillar that is needed is innovative tools and governance. So for doing the innovation, we need few basic tools based on the challenge that we are handling. It can be a laptop, stable internet, working capital. So we need some tools for doing our innovation. We also need, so innovation करने के लिए हम लोग को एक कुछ tools की जरूरत होता है जो भी हम challenge हैंडल कर रहे हैं। एक बेसिक लैपटॉप हो सकता है, बेसिक इंटरनेट हो सकता है, वर्किंग कैपिटल हो सकता है। तो ये भी एक पिलर है।
और एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर रहना चाहिए. We need a governance to follow how customer data is going to be managed, how cash flow will happen to maintain the working capital, whether we want to create a company in partnership, single ownership, or we want to just create the patent and then we will give the license to a different organization for selling the product. तो हम लोग को एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी रहना चाहिए जिससे डिसीजनिंग करने में हेल्प मिले हमें. कस्टमर डेटा कैसे मैनेज होगा, कैश फ्लो कैसे मेंटेन होगा ताकि वर्किंग कैपिटल बने रहे. फिर एक सिंगल कंपनी, सिंगल ओनर कंपनी बनाना है कि जॉइंट पार्टनर्स में बनाना है, सिर्फ पैटर्न खरीदना है और लाइसेंस किसी और को देके उसको प्रोडक्ट किसी और से बनाना है. तो ये सारे डिसीजन करने की एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए. इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है. जब हमारे पास ये दो पिलर हो जाएगा तब हम लोग को स्टार्ट करना है अंडरस्टैंडिंग करेंट चैलेंज विद कस्टमर एम्पैथी. So we need to understand the current challenge by wearing the customer shoe. तो अभी हमको सोचना है जो चैलेंज हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं वो कस्टमर कैसे फेस करे, कस्टमर पर्सपेक्टिव में हमको सोचना है. We need to evaluate the problems we are addressing is impactful in a sense it is impacting a sizable population and a portion of the population is willing to pay for the service. जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं एक क्या बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत से पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं. एंड अगर हम लोग इसको एक कॉस्ट लगाते हैं, पेमेंट लगाते हैं, आर दे विलिंग टू पे मी, मतलब वो लोग पेमेंट करने के लिए रेडी है. तो ये हमको एनालाइज करना पड़ेगा. फिर हमें देखना पड़ेगा जो हम लोग सोल्यूशन ला रहे हैं मार्केट में उसके लिए कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है कि नहीं, और ऑलरेडी है वो इफेक्टिव है कि नहीं. अगर कोई सोल्यूशन नहीं है और जो सोल्यूशन है वो इफेक्टिव नहीं है, उसको हम लोग बेटर कर सकते हैं, देन दैट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस. I think there is some technical Yeah, issue at Devyendu's end. I, You're there? I, yeah, I'm here. Are you able to hear me? Yes. Yes. So any question till now? No, let us hear you Okay. first and then Ha. we'll invite questions. Yes. Okay, fine. So we are discussing about the problem statement. It has to be impactful. And there should not be any solution. Or even if there should be a solution, there should not be effective enough. Then only there's an opportunity to work on that particular problem statement. Okay. So now once we identify the challenge, we want to perform the solution selection within the constraint of time, money and talent. तो जैसे प्रॉब्लम सिलेक्ट हो गया, अभी हमको सॉल्यूशन सिलेक्ट करना है. हमारे कंस्ट्रेंट क्या है? टाइम, मनी एंड टैलेंट. ये तीनों चीज लिमिटेड है हमारे पास. तो ये तीनों चीज को कैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हम लोग सॉल्यूशन ला सकते हैं, ये हमको देखना पड़ेगा. सो टू गेट रिकॉग्निशन ऑफ द इन्वेंशन वर्क डन, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द सॉल्यूशन पेटेंटेड. सो जो हम लोग इन्वेंशन वर्क कर रहे हैं तो उसको पेटेंट करना बहुत जरूरी है. So for patent requirement is the solution should be to a technical or technological problem. Okay, so patenting करने के लिए सबसे बड़ा requirement है this should be a solution जो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. So other way, if it identifies a non-technical solution to a business problem, although it is a new, it is not likely to be patentable. Invention not solving a technical or technology problem are generally not eligible for patent protection. तो कोई solution है जो नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तब वो पेटेंट नहीं होगा. To give you an example, you are using a debit card for purchasing grocery. Now you found that you can use the same debit card for purchasing movie ticket. Then it is not patentable as you are using the same technology but for a different business use case. तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे डेबिट कार्ड के सॉल्यूशन है मार्केट में जो हम ग्रोसरी खरीदने में यूज करते हैं. तो आपको लगा रिसर्च करके हम लोग सेम डेबिट कार्ड को हम लोग मूवी टिकट खरीदने में यूज कर सकते हैं. तो ये इनोवेशन नहीं होगा क्योंकि हम लोग एक नॉन टेक्निकल सोल्यूशन है डिफरेंट यूज केस में यूज कर रहे हैं, पर हम लोग कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं और कोई इनोवेशन हमारे नहीं है यहाँ पर. सो इनोवेशन हैज टू बी इन मेथड, डिजाइन और प्रोसेस. Okay, so for patentable solution, the solution also has to be novel and it has to be inventive. Novel means the solution should not be already published or it should not be publicly known. Or inventive means the solution is not obvious
और प्रेडिक्टेबल इन व्यू विद पब्लिक एग्जिस्टिंग नॉलेज। जैसे हमें बोले ऑब्वियस, हमें पता है वी कैन यूज हल्दी फॉर इन्फेक्शन, तो दैट इज नॉट ए पेटेंटेबल सॉल्यूशन। जो ऑब्वियस है, जो ऑलरेडी सबको पता है और पब्लिकली नोन है, उसको हम लोग इन्वेंटिव नहीं बोल सकते हैं। इसलिए फॉर गोइंग फॉर ए पेटेंट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू डू ए पेटेंट सर्च। ऑलरेडी मार्केट में ऐसा सॉल्यूशन है कि नहीं, ऐसे ऑलरेडी किसी ने पेटेंट और पेपर पब्लिश कर चुका है कि नहीं पब्लिक डोमेन में। अगर ऑलरेडी है देन इट विल नॉट बी पेटेंटेबल। ओके, now apart from the solution to be patentable, also we need to see if the solution is business relevant or there is a product fit to the market। हमको ये भी देखना जरूरी है, solution business relevant होना चाहिए ताकि हमको मतलब प्रॉफिटेबल रहे जो सॉल्यूशन के में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मगर opposite is not true, business relevancy है, it not necessarily it will be a patentable solution or innovative solution। as example I gave, right? If you have debit card for grocery, you might get more money if you go for a movie ticket, but that solution may not be patentable or innovative। Okay, so a solution to be patentable, you also need to see customer is willing to pay for it on sustainable basis or not। Okay, so for it we will create a similar positioning statement। So what is positioning statement? Positioning statement will help us to create in this format, where we'll write, okay, this solution I'm developing, this is for which target customer, who want to use it, and for what need or opportunity। Okay, then we have to define product name and product category, and then we have to explain the statement of benefits, and we need to call out the differentiation, like unlike primary competitive alternative, what is the unique value proposition offered by this product with statement of primary differentiation। तो एक पोजिशनिंग स्टेटमेंट हम लोग बना सकते हैं, ये जो सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं किस कस्टमर के लिए बना रहे हैं, और कौन इसको यूज करेगा, उनका नीड अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिट क्या है प्रोडक्ट का, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक फॉर टेस्ला। टेस्ला पोजीशन पॉसिबल पोजीशनिंग स्टेटमेंट क्या होगा? फॉर ए वेल्दी इंडिविजुअल एंड कार लवर्स who want an environmental friendly and high end sport car, the Tesla Roadster is the product name, is a electric automobile that delivers, इसका बेनिफिट हम बोल रहे हैं, that delivers unprecedented performance without damaging the environment। उनका डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन, अनलाइक फेरारीज एंड पोर्सेस, our product our product uh, delivers performance without damaging the environment। so क्या बोल रहे हैं, फॉर टेस्ला इट इज फॉर ए वेल्दी इंडिविजुअल, जो अमीर आदमी उनके लिए है और जो कार प्यार करते हैं, जो ये प्रोडक्ट है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है और हाई एंड स्पोर्ट्स कार को जो पसंद करते हैं। ये प्रोडक्ट नेम है टेस्ला रोडस्टर, जो एक इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल है, और ये क्या करता है ना, अनप्रेसिडेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना। और इसका डिफरेंशिएशन क्या है? फेरारीज और पोर्शे जो है सिमिलर हाई एंड कार, उससे बेहतर ये माइलेज देते हैं और ये अनपैरेलल्ड परफॉर्मेंस देते हैं, परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर देते हैं। और इनका कोई डायरेक्ट कार्बन एमिशन नहीं है, मतलब डायरेक्ट कार्बन एमिट नहीं करते हैं जैसे फेरारी और पोर्शे करते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक पोजिशनिंग स्टेटमेंट बनाना है, दैट विल हेल्प अस टू create our product fit। Then we have to create the value proposition canvas। तो वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास मींस हमको देखना है द सॉल्यूशन जो हम लोग ला रहे हैं, इससे हम लोग कस्टमर का कोई पेन सॉल्व कर रहे हैं, ना उनका कोई गेन क्रिएट कर रहे हैं, ना उनका जो डे टू डे काम है उनको कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं। सो वी हैव टू सी द सॉल्यूशन दैट वी आर ब्रिंगिंग, आर वी रिलीविंग एनी पेन फॉर द कस्टमर, और वी आर क्रिएटिंग सम कन्वीनियंस और क्रिएटिंग सम गेन फॉर द कस्टमर, और वी आर हेल्पिंग देम टू डू द डे टू डे वर्क। सो एज यू कैन सी इन अ सर्कल, for example, pain reliever can be a micro oven where we use for quickly and safely make our food warm, right? And then or gain creator can be, we know that public transport can take us from one place A to place B, but might be personal car will be a gain creator for me because I will be able to move on my own convenience। So that is a gain creator solution। Now like laptop can be a solution for customer day to day job which I can use for my office work or my personal work। so हम लोग देखना है सॉल्यूशन को हम लोग डे टू डे काम में यूज कर सकते हैं क्या, कोई पेन को रिलीव करने में यूज कर सकते हैं क्या, कोई कन्वीनियंस के कारण यूज कर सकते हैं। तो इस कैनवास में हम लोग को हमारे सॉल्यूशन को पुट करना है। ओके, सो वंस वी डू दिस, hope it is clear till now। so once we do this, the next pillar is we have to create a prototype।
and we have to take customer feedback. So in prototype, we create minimal viable product which can cater to subset of customer with a subset of functions, and then we take customer feedback. तो next step क्या है, प्रोटोटाइप बनाना, जिसमें हम लोग मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हमारा मेन प्रोडक्ट इन्विजनिंग है, जो जिसमें माने 10 फंक्शन रहना चाहिए, उससे हम लोग 4 फंक्शन ही बनाएंगे। इसमें फंक्शन मतलब सबसेट ऑफ फंक्शन बनाएंगे, और मेरा इन्विजन है, मैं 4 मिलियन कस्टमर्स को मेरा कस्टमर टारगेट सेगमेंट है, इसमें मैं 400 कस्टमर को टारगेट करूंगा। उस 400 कस्टमर्स के लिए और 4 फंक्शन लेके मैं अपना प्रोटोटाइप बनाऊंगा, और मैं कस्टमर से फीडबैक लूंगा। फिर वट एवर फीडबैक आई गेट फ्रॉम द कस्टमर, आई यूज दैट टू इम्प्रूव माई प्रोडक्ट और क्रिएट न्यू फंक्शन फॉर माई प्रोडक्ट इटरेटिवली। सो जो भी हमको कस्टमर फीडबैक मिले, उससे हम लोग इटरेटिवली हम लोग अपना प्रोडक्ट को बेहतर बनाएंगे, नहीं तो और नया फंक्शन जोड़ेंगे प्रोडक्ट में। ओके, सो दिस इज अबाउट कस्टमर फीडबैक। नाउ वी हैव टू मेक द प्रोडक्ट मार्केट रेडी। तो हमको मार्केट भी, जैसे प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बन गया, अब स्लोली वी हैव टू स्केल फॉर अदर मार्केट। जब हम लोग मार्केट रेडी बना रहे हैं, हम लोग कुछ चीज में ध्यान देना है, हमारे प्रोडक्ट सस्टेनेबल है कि नहीं। So while creating the solution, you need to ensure the solution is sustainable or not. Now, sustainability can be in technology. For example, currently your solution catered the need for 100 customer, but might be during festive season such as Diwali or in Eid, the customer traffic might be increased to 1,000. So your solution should be able to meet the scaling up or down need of the customer. तो एक फॉर हमारे जो सोल्यूशन बनाएंगे, हम लोग कुछ चीज में ध्यान देना है। जैसे एक है, सोल्यूशन को सस्टेनेबल होना है। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में हो सकता है, जैसे कि अभी हम लोग 100 कस्टमर को नीड को पूरा कर रहे हैं, मगर कोई फेस्टिव सीजन आ गया जैसे दिवाली हुआ और ईद, जहाँ पे कस्टमर ट्रैफिक 1000 आ सकता है, तो उस सिचुएशन में भी हमारा सोल्यूशन स्केल अप करके वो डिमांड मीट करना चाहिए। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल। और बिजनेस सस्टेनेबल भी होना चाहिए। सो आवर सॉल्यूशन नीड्स टू बी सस्टेनेबल टू मीट कस्टमर नीड फॉर ए लॉन्ग टाइम, टू बी प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग रन। तो हमारा सॉल्यूशन लॉन्ग टाइम में वायबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, ताकि हमको प्रॉफिट मिले और ये बिजनेस सस्टेन कर सकें। ओके, सो दिस इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमको देखना है, द सॉल्यूशन नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। इट शुड डू वैल्यू एडिशन टू सोसाइटी और पीपल एट लार्ज। तो हमारे सॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए, जो सोसाइटी को और पीपल एट लार्ज को वैल्यू एडिशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर एनर्जी इन्वेंशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये गुड रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, बट फॉर अदर पर्पस इट माइट नॉट बी। जैसे एग्जाम्पल, न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग रेस्पॉन्सिबली इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेम सिमिलर इनोवेशन कोई डिस्ट्रक्टिव काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा इनोवेशन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एंड एंड देन वी हैव टू टेक कस्टमर फीडबैक कंटिन्यूअसली। तो फिर हम लोग कस्टमर फीडबैक ले लिए, और फिर अपना प्रोडक्ट को इम्प्रूव किए और न्यू फंक्शन ऐड किए। नाउ व्हेन यू आर बिकमिंग मार्केट रेडी, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू ट्रैक वैल्यू यूजिंग केपीआई और मैट्रिक्स। सो हम लोग कंटिन्यूअसली ट्रैक करेंगे, हम एट ईच लेयर हम कैसे वैल्यू दे रहे हैं कस्टमर को। तो इसीलिए हमको कोई केपीआई या मैट्रिक्स रहना चाहिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ताकि मालूम चले हम लोग कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। तो वो वैल्यू ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। तो वैल्यू ट्रैकिंग करना जरूरी है, और उसको कम्युनिकेट करना भी जरूरी है कस्टमर को और स्टेक होल्डर्स को, हम लोग कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। सो दैट द ट्रस्ट इज बिल्ड अप, क्योंकि फॉर एनी बिजनेस द ट्रस्ट बिटवीन कस्टमर एंड द बिजनेस ओनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ताकि ये ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि कस्टमर्स भी फीडबैक दे और बिजनेस ओनर को भी प्रोएक्टिवली कम्युनिकेशन भेजना चाहिए, हाउ दे आर इम्प्रूविंग एंड व्हाट दे आर थिंकिंग एनविजनिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट। Okay, so the pointers and pillars that we discussed, right? So all this if we implement, then it will definitely will help us to achieve the growth trajectory. So जो भी हम लोग pillars and pointers डिस्कस किए हैं अभी, अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट किए, तो डेफिनेटली हमको एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पाने में हेल्प करेगा, और हमारा इनोवेटिव सॉल्यूशन इंडियन मार्केट में लाने के लिए हेल्प करेगा। और डेफिनेटली इट विल हेल्प टू अचीव द ड्रीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू मेक आत्मनिर्भर भारत। तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के एम है आत्मनिर्भर भारत करने के लिए, ताकि हम लोग सेल्फ सस्टेन हो सके, हम लोग जो मैक्सिमम प्रोडक्ट खुद बना के खुद यूज कर सके। सो दैट इज अबाउट टुडेज डिस्कशन। नाउ आई लाइक टू ओपन द फोरम फॉर एनी क्वेश्चन। अभी आपका कोई क्वेश्चंस है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग ए वेरी गुड लिसनर। Thank you, Mr. Divyendu, for that very interesting deliberation. I would request you to now stop
sharing of your Yes. presentation so Yeah. that we can initiate the discussion. Yes. Uh, And thank you. Any if you have any further question, you can also reach to my personal email dchat03@gmail.com. Thank you for being a wonderful listener. okay, Yes, ma'am. thank you, Divindu. And we have with us in our audience the faculty members and students of Jagan Institute of Management Studies, Delhi. I welcome the faculty and students of Jagan Institute of Management. And दिव्येंदु, आपका जो टॉक था, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, यहाँ पे आपने द पिलर्स, जो मेन पिलर्स हैं इनोवेटिव सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं एक इनोवेटर्स को जानना, उसको बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है. एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस में भी लोगों के मन में काफ़ी सवाल आए होंगे और जो पूछना चाह रहे होंगे. बट बिफोर आई इनवाइट देम, एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अगर अपने इनोवेशन के बारे में बोलें, एंड स्पेशली जो आपने जो फेलियर्स एनकाउंटर किए होंगे और कैसे उसको ओवरकम किया है, अगर उसके बारे में आप बताएं तो आई एम श्योर दैट विल हेल्प मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन द जर्नी ऑफ इनोवेशन. Yes, sure, ma'am. So, yeah, as you told rightly, ma'am, like I got award in Innovat, like in IGNOU Innovation Contest, then Banglathon, which is organized by West Bengal government, Webel and NASCOM. Then I'm currently in contesting, and I'm in the top 30 in the 5G hackathon, which is organized by Department of Telecommunication. So challenges hai in the field of research. When you experiment 10 things, 9 things will fail, one thing will pass. मगर आपका हौसला नहीं हारना है. You might get demotivation, like why you are spending so much time in the research and it might not be fruitful. But अगर आपके पास confidence हो, then you will definitely you will be able to give that extra time, because you have to manage whatever work you are doing or study apart from, because research will be like always an extra thing. So if you are confident and you are motivated, then definitely you will be able to overcome those failures. अगर कोई भी एक solution में result नहीं भी आया हो और जो expected आप result कर रहे हैं उससे different आया हो, तब भी you will move forward. But one thing is very important in research, you have to be ethical. अगर जो भी result आया है, you have to represent as is. Like it is not that okay, whatever data, let us submit it, let us close it, ऐसे नहीं करना है. अगर नहीं आ रहा है, whatever correct result, we have to take feedback and we have to take it forward. And whatever result at last is coming, after doing thorough research, we have to represent that research point only. So that is what is what I feel my learning. Thank you, Divindu. For our listeners, Divyendhu is also a member of Institution's Innovation Council at IGNOU, and he is the student IPR coordinator. So now I would like to invite any comments, observations, questions, queries from our listeners. So I request you to kindly raise your hands and ask your question or present your observations, please. Hope that topic was clear to you all. So do we have any observations, please? Anybody who wants to present their observations or questions or queries? I would like to invite our faculty members at GYMS also to give their comments. And we have our listeners from regional centers as well of IGNOU. And I'd like to invite them also to give their comments. Even if it is simple question, you can ask, no issue. Dr. Naik, would you like to ask any question or any observations?
Thank you, Dr. Das. Thank you, Dibyenduji. It was a very nice presentation because today is the 1st of April. That is the one day after 31st of March. We are all busy with clearing all the pending works. So, but it was a wonderful presentation. I was just looking at the first three slides where you have tried to put everything that an innovator is required to keep in mind. वो सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा. So I am pretty sure that all our learners who are taking part in this Facebook live session, they would be benefited. And thank you NCIDE for inviting the Benduji for this session. Thank you very much. Namaskar. Thank you, Dr. Naik. Thank you, sir. So I don't think that we have any other observation or any comments from our listeners. Uh, is there anybody else who wants to say something? So if yes, Dr. Navneet, welcome. Good afternoon, ma'am. It's a very nice and motivational session, and very good things said by Dr. Divyendu Chatterjee. It will highly motivate you. Thank you very much for such kind of session. Thank you. Thank you, Dr. Navneet. Divyendu is our student, and we are encouraging our student innovators also to present what their innovation and their point of view also, so that the fellow students get motivated by their work. Yeah. That is the aim that we are. Yes, sessions are very much important. Yes. Students can learn so many things from each other. Yes, indeed. Thank you. Thank you so much. RC Cochin is asking Divyendu how to mobilize funding. So we have to see, like, for our minimal viable product, right? What is the working capital we need? So we can start humble. So we can have like your parents' help or whatever investment you have till now. You can start with that, and then it is like you can always go for some hackathon contest, because Indian government is providing a lot of hackathon contests. For example, I got award money from 5G hackathon. So like that, Indian government is encouraging the individual innovators, the student innovators, the entrepreneur or startup to come up with the ideas. So once you contest there and you give your unique value proposition and they like it, then they will give you fund, and then you can start with that. And then, as you are aware, right, once you scale up, you have a lot of funding, series A, series B. So a lot of investors will be interested for your solution to invest. And once you get a patent, and then you can license it also. So any company would be like to manufacture the product, and they will give you the royalty for that. So funding opportunity or option will be multiple, but one thing, you should have that entrepreneurial mindset and growth mindset, as I mentioned. Then the other things will fall in place. Thank you, Dibyendu. I hope RC Cochin has got the answer to the query. And RC Cochin is again asking, can you share your experience of how you got interested in innovation-related activities, Dibyendu? Yes. So it started from my school life itself. Well, I would like to do some kind of project work, and I used to go to the district science seminar. From there, I used to be referred to the state science seminar. So like that, the interest grew. Then you can see today in India there are a lot of motivation in the college level, then at the institute level, where mm, people are encouraged to come up with the ideas. And then once you give idea and you get good positive feedback, you get award, that gives you more motivation. I'm not saying that award is the only way to get motivation. It should come from your internal, but those things, and then you get good feedback from your institute teacher who are ready to like go an extra step and help you for your research work. Then once you submit patent, it got accept, that gives you more encouragement. Like that, it is a vicious circle. So once for example, a sportsman, right, initially they will start playing slowly. Then once they start getting run in Ranji, they will enjoy it. Then they will come to Indian team and they will scoring more, and it will become their part of their habit and daily life, right? Like this, it will become.
Thank you, Divindu. So, do we have any other queries or questions or observations? Okay, so if we do not have any other observations, we should wind up today's session. Thank you all. I'd like to thank Mr. Dibyendu Chattopadhyay for sparing his valuable time to give this inspiring talk. I thank all the directors and heads, regional directors, faculty members, and academics of IGNOU for attending today's session. I would like to thank all the faculty members of the Jagan Institute of Management Studies and the students of Jagan Institute of Management Studies for attending today's program. I thank Mr. Rajesh Sharma, Head of the Public Information Unit, for providing NCID with the Facebook Live platform and ensuring the smooth conduct of the session with utmost dedication. I thank Dr. O.P. Sharma, Director NCID, and my colleagues Dr. Jyotsna Dikshit and Dr. Sujata Santosh for their untiring support. I thank Mr. Pawan Kumar for extending his assistance in the smooth conduct of this program. So this brings us to the end of today's session. We hope to see you next week. Till then, namaste. Thank you. Thank you. Thank you for inviting, ma'am. Thank you very Thanks, much. ma'am. Thank you.